हाँ जी, फुल फ्लैज क्वेश्चन। से company offered 10,000 shares, A Limited offers 10,000 shares at the rate of 10 each, 100 each. The money received as follows. Money receives as follows. On application 25 per share, allotment rupees 40 and balance on call. $35. Total is 100. The application received for means public applied for 9,000 shares and all money were duly received. All money duly received except the final call of rupees 35 on 200 shares. ठीक है जी. And shares were being forfeited. Out of these 100 shares reissued at the rate of 90 as fully paid up. ये बेटा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन एरिया रहेगा आपका, एक तो बेटा ऑफर्ड शेयर्स थे आपके पास 10,000 शेयर और 1 शेयर कॉस्टिंग रुपीज 100 ईच, और बेटा तो ब्रेकअप अमाउंट इज दिस. ऑन एप्लीकेशन 25, ऑन अलॉटमेंट 40 रुपीज, ऑन कॉल 35. Public applied for 9,000 shares only. It means बेटा ये कौन सा केस हुआ है यहां पर, पहले तो वो क्लियर कर ले. अंडर सब्सक्रिप्शन. Because public applied for less number of shares. तो बेटा यहां पे 10,000 एप्लीकेशन का कुछ नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो 9,000 शेयर्स. ठीक है. Then all money duly received except final call mean 35 rupees on 200 shares. ठीक है. And these shares being were forfeited and out of these 100 shares were reissued at the rate of 90 per share. ठीक है. तो बेटा किस वे से जर्नल एंट्रीज, फुल फ्लैज क्वेश्चन. इससे पहले हम जस्ट फॉरफीचर की बात कर रहे थे एंड रीइश्यू की. अब कंप्लीट क्वेश्चन. इस कंप्लीट के अंदर ए टू जेड जितनी भी एंट्रीज पॉसिबल है वो सारी. ठीक है जी. तो बेटा फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा अमाउंट बेटा विच इज गिवन बाय द पब्लिक टू द कंपनी. नो डाउट कंपनी ऑफर 10,000 शेयर्स but public applied for only 9,000 shares.
So the application money received as per the number of share applied for. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. So total amount is 9,000 shares into 25 of application. ठीक है जी, 22,500. ठीक है जी. Being application money received on 9,000 shares. ठीक है जी, 22,500 यही आएगा. Second, all money received through application transferred to share capital. Being money transferred to share capital 22,500. Then third entry for allotment, share allotment account debit. Beta 9,000 allotted share, allotment money 40 per share. So the total due amount is 36,000 to share capital account. Being allotment money due 36,000. Then fourth, bank account debit to share allotment account. So beta, in this question all the money received except the call money on 200 share. So it means total allotment money received 36,000. Then share first and final call. एक ही कॉल है. Share first and final call to share capital being call money due on 9,000 share and the call money is rupees 35. तो बेटा 31,500. ठीक है. Then this is the due amount, but one shareholder fails to pay the call money to share first and final call. Beta due amount was 31,500 minus on 200 shares call money is unpaid and call money is rupees 35 per share. तो ये क्या रहेगा, -7,000 on 200 shares rupees 35 per share 7,000. ठीक है जी. तो बेटा 7,000 कॉल्स इन एरियर, तो यहां से माइनस हो जाएंगे 7,000, यह आ जाएगा 24,500. एक्चुअल नेट अमाउंट रिसीव. ठीक है जी, यहां तो कोई डाउट. सिंपल एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 9,000 शेयर्स. बेटा देन नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, allotment due on 9,000 share 40 each, allotment money received, all the shareholder paid the money, but first call money or first and final call money is unpaid on 200 share, but the due entry किससे करोगे, full amount के साथ, and the full amount is on 9,000 share 35 per share means 31,500. But out of these, one shareholder having 200 share fails to pay the 35 rupees on call. So means beta rupees 7,000 is unpaid, which is calls in arrear. So total amount received on call is 24,500 out of 31,500. But after this, beta company decided to forfeited these shares. So
नेक्स्ट एंट्री फॉर कैंसिलेशन द शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो क्या एंट्री रहेगी नॉर्मली? नेक्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200 गिवन है हमें, इनटू बेटा कॉल्ड अप इज 100 पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कॉल्ड अप 200, तो बेटा अमाउंट इज 20,000 एंड अनपेड इज 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही कॉल है बेटा ₹35 की ऑन 200 शेयर्स। तो क्या रहेगा 7,000 एंड 2 शेयर फॉरफीचर, बाकी अमाउंट क्या आ जाएगा इसका पेड अप 65, 13,000 being share forfeited due to non payment of call money। ठीक है जी। बट फर्दर क्या लिखा बेटा क्वेश्चन में? आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 90 पर शेयर, फुली पेड अप। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज फॉर रीइश्यू बैंक account debit, 100 shares are reissued at the rate of 90 per share to share capital 100 into called up 100, 10,000 and beta loss per share is 10 per share, 100 into 10, 1,000 and final entry is amount transfer to capital reserve which is share forfeiture account debit to capital reserve। ठीक है। तो बेटा यहां भी proportionate shares are reissued means forfeited shares are 200 shares but reissued are only 100 share। तो क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको? 100 shares का पेड अप अमाउंट। तो बेटा अगर 200 शेयर्स का अमाउंट है यहां पर 13,000, तो 100 शेयर्स का अमाउंट क्या हो जाएगा? इंटू 65, 6,500 एंड लॉस इज 1,000। तो 6,500 माइनस 1,000 लॉस, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विच इज 5,500। तो बेटा यह था आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। यहां पर आपके फॉरफीचर भी थे और यहां पर रीइश्यू, पार्टली रीइश्यू भी थे शेयर्स, और बाकी एंट्रीज भी। ठीक है जी। तो बेटा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका, तो यहां से सबसे पहले ऑफर्ड शेयर्स क्या थे, देन अप्लाइड शेयर्स क्या रहेंगे, और मनी की डिटेल क्या थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, अनपेड, पेड अप, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर रीइश्यूड, जो हमें मेन क्वेश्चन के अंदर चाहिए होता है। ठीक है। हाँ जी बेटा, एक और एग्जांपल देखते हैं। कंपनी ऑफर्स 40,000 shares at the rate of 10 each, issued at a premium of ₹2 per share। ठीक है। मनी रिसीव एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 5, on allotment 5 including premium, means 3 plus 2 and first call 2 and
सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो बैलेंस क्या हो जाएगा यहां पर 5 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट, बट इस 5 के अंदर प्रीमियम ऑलरेडी है, तो बेटा ये क्या हो गया 3 + 2, 2 इज प्रीमियम एंड 3 ऑफ अलॉटमेंट, तो टोटल अलॉटमेंट 5 विच मीन्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो क्या रहेगा 5 + 3 8 + 2 10। ठीक है, तो इस केस में फाइनल कॉल बैलेंस क्या हो जाएगा 0 सिंपली। आगे ऑल मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट allotment money on 500 shares and these shares being forfeited। ठीक है, and these shares being forfeited, after that on further 200 shares call money, call is also unpaid, and these shares were also forfeited। ठीक है, आउट ऑफ दीज 700 shares were reissued at the rate of 8 per share, fully paid up। मेक जनरल एंट्रीज। ठीक है, सो बेटा कंपनी ऑफर्स 40,000 शेयर एंड ब्रेकअप इज दिस। 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, बट at the time of receiving the money, all money received except allotment money on 500 share and these shares being forfeited। ठीक है, so बेटा these shares being forfeited immediately after the allotment money, and after that on further 200 shares call is also unpaid, call money is also unpaid। ठीक है, एंड दीज शेयर्स वर ऑल्सो फोरफेटेड। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज 700 शेयर्स बेटा टोटल मींस 500 शेयर + 2, 700 शेयर्स बीइंग फोरफेटेड कैंसल्ड, एंड आउट ऑफ दीज 700 शेयर्स ऑल द शेयर्स मीन 700 आर रीइश्यूड। बट बेटा ये जो फोरफिट हो रहे हैं शेयर इन 2 पार्ट्स, एक आफ्टर allotment money and second one is after first call। ठीक है, तो बेटा किस वे से एंट्रीज देखो इसके। फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, तो बेटा कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा पब्लिक ने 40,000 ऑफर्ड शेयर्स के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट ऑन 40,000 शेयर एंड बेटा एप्लीकेशन मनी इज 5 पर शेयर। ठीक है जी, तो बेटा आ गया 2 लाख टू शेयर application account being application money received on
40,000 शेयर ऑफ ₹5 ईच। ठीक है। देन सेकेंड वन इज all the money being received on application transferred to share capital. Being share application money transferred to share capital. ठीक है। Then third one, share अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब बेटा इस केस में अलॉटमेंट मनी इज ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो क्या रहेगा यहां पर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो बेटा ऑन 40,000 शेयर टोटल अलॉटमेंट मनी इज 5 पर शेयर, means 40,000 into 5 and the breakup is 3 plus 2, 2 of premium. $2 lakh and breakup 1,20,000 and 80,000. Being share allotment money is due on 40,000 शेयर। ठीक है। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फॉर रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड आपके पास ऑल मनी रिसीव एक्सेप्ट allotment money on 500 shares. So on 500 shares ₹5 per share is unpaid, means ₹2,500। तो क्या आ जाएगा यहां पर, ये 2,500 इज अनपेड, तो क्या रहेगा बेटा यहां पर नॉर्मली 1,97,500 बैलेंस। ठीक है, 1,97,500। देन अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, कहता दीज शेयर्स बीइंग फोरफिटेड, मींस किसके बाद की बात कर रहा है, अलॉटमेंट के बाद। एक आगे और कैटेगरी यहां पे जाकर जिसने 200 शेयर्स के ऊपर कॉल मनी पे नहीं करी, पर बेटा उससे पहले ये 500 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं। तो यहां पर एंट्री क्या रहेगी फोरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 500 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट टिल डेट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो बेटा वैसे क्या बन रहा है 10, पर इस 10 के अंदर प्रीमियम भी है, तो कॉल्ड अप क्या हो गया 8 पर शेयर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 500 into 2 because 2 is the premium money which is unpaid। तो टोटल बेटा ये 4,000 एंड यहां पर 1,000। 2 क्या अनपेड है, अलॉटमेंट मनी विच इज 500 into 5, 2,500। देन पेड अप इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 into 5, 2,500 is paid up। ठीक है जी। सो आफ्टर बेटा फोरफीचर, नेक्स्ट एंट्री फॉर योर शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। बेटा टोटल शेयर्स क्या थे कंपनी के पास 40,000, बट आउट ऑफ 40,000 शेयर्स
500 shares being cancelled. So call money due on 39,500 share of 2 each. ठीक है, क्योंकि 500 शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट क्या हो रहे थे, कैंसल्ड, फोरफिट. ठीक है, और बेटा साथ ही फर्स्ट कॉल ड्यू. नाउ द फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 40,000 शेयर इंस्टेड ऑफ 40,000 शेयर 39,000 share 500, because 500 share is already forfeited, cancelled. So according to this बेटा याद आएगा आपके पास amount at the rate of 2,079,000. ठीक है, and after this again one shareholder having 200 shares fails to pay the call money. ठीक है जी, then बेटा entry for receiving call money, bank account debit to share first and final call. So total due amount is rupees 79,000 minus 79,000 माइनस क्या होता है यहां पर, कितने शेयर्स के ऊपर क्या रहा है यहां पर, 200 शेयर्स के ऊपर कॉल मनी इज अनपेड. तो ऑन 200 शेयर्स ₹2, मतलब 400 रुपीज इज अनपेड. ठीक है, तो अमाउंट क्या रहेगा यहां पे 400 का 78,600. ठीक है जी, 78,600, because बेटा ऑन 200 शेयर कॉल मनी इज अनपेड. ठीक है, एंड आफ्टर दैट दीज शेयर्स ऑल्सो बीइंग फोरफिटेड. तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 shares called up बेटा now 10. पहले called up क्या था 8 per share, because these shares are forfeited after the allotment money, but these shares 200 shares being forfeited after the call money, so the called up is 10 per share 2,000. बेटा प्रीमियम पेड है, प्रीमियम डिस्क्लोज नहीं होगा. क्या अनपेड है यहां पर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, which is on 200 share, call money is 2 per share 400, and paid up amount is share forfeiture. So on 200 share into 8 1600, and last में क्या कह रहा है, out of these 700 shares were reissued at the rate of 8 per share. तो बेटा 200 ये थे और 500 ये थे. ऑल द फोरफिटेड शेयर बीइंग रीइश्यूड. तो क्या रह जाएगा यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू 700. किस रेट से रीइश्यू हो रहे हैं बेटा, वो भी गिवन है आपको 8 पर शेयर, एंड कॉल्ड अप ऑन दैट डेट 700 into 10, एंड शेयर forfeiture 702, लॉस पर शेयर 2 हो जाएगा यहां पर, एंड 1400. ठीक है, तो बेटा ऑल द फोरफिटेड शेयर बीइंग रीइश्यूड, मतलब ये 500 शेयर्स भी और ये 200 शेयर्स भी क्या हो रहे, रीइश्यूड. सो द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विच इज शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व. ठीक है, सो द अमाउंट इन शेयर फोरफीचर 2500 एंड प्लस 1600, एंड लॉस इज बेटा 1400. सो टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व
2500 is already there, plus 1600 and minus 1400 and balance transfer to, तो क्या आ जाएगा 2700 अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। तो बेटा क्वेश्चन जिस वे से क्वेश्चन की वर्डिंग है उसी वे से आपको एंट्रीज यहां पे शो करनी होती है नॉर्मली। अब जैसे यहां पे फोरफीचर की एंट्री दो जगह क्यों, एज पर द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट मेंशन था कि हाँ जी 500 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी इज अनपेड एंड दीज शेयर्स बीइंग फोरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। तो बेटा वो अलॉटमेंट की एंट्री के बाद आपने फोरफिट कर दिए, देन आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू on 39,500 share because 500 shares being cancelled। ठीक है, तो आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मनी इज ऑल्सो अनपेड ऑन फर्दर 200 शेयर्स, वो कर दिया आपने अनपेड। एंड वो शेयर भी क्या कर रही थी कंपनी कैंसिल यहां पर, तो 200 शेयर फोरफिट यहां भी हो गए। Then after that बेटा these forfeited shares, all forfeited share मतलब 500 वो 200 700 shares are reissued at the rate of 8 per share। ठीक है, तो यहां भी कंपनी को लॉस बियर करना पड़ा यहां पर 1400। ठीक है, तो बेटा एट दैट टाइम ऑफ ट्रांसफर द मनी टू कैपिटल रिजर्व इज 2500 अमाउंट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड इन शेयर forfeiture account and 1600 is already credited and beta debited is 1400, transfer to capital reserve is 2700। ठीक है जी। तो बेटा एक ये फुल फ्लैज क्वेश्चन एक टाइप ए बन जाएगी।